Us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, once again I am with you with the same topic which we were learning in our last class, that is Al Hadithun Nabawiyyu Sharif. In our last class we had translated a paragraph. Okay, total 5 paragraphs are there. Amongst those 5 paragraphs, we have translated 4 paragraphs so far. 1 paragraph is still remaining. Thanks to that girl who has reminded me that 1 paragraph has been missed. So we convey our thanks to her. Every student should pay such a concentration to that level that sir, what the sir is missing, what is covered, what is missing, that you have to be very careful. Okay, now what we will do in our today's class we will first we will solve the paragraph. First we will solve the oral question and answers of the lesson Al Hadithun Nabawiyyu Sharif. Then we will go to the paragraph session. If the time permits, then we will solve singular to plural words. Okay? Now, first we have covered the lesson Al Hadithun Nabawiyyu Sharif. Here are the questions. Ma huwa al Hadithu Sharif? If you have listened the topic, then you are supposed to be prepared for this answer. Okay. Ma huwa al Hadithu Sharif? What is prophetic tradition? What is prophetic tradition? What would be the answer? Al Hadithu Sharifu wa kullu ma nuqila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Huwa al Hadithu Sharif. Okay. Ma huwa al Hadithu Sharif? What is prophetic tradition? The prophetic tradition is that whatever narrated from the prophet in terms of words, in terms of acts, and in terms of silent approval, and in terms of any attribute. These all 4 categories comes under the prophetic tradition, sunnah of the prophet. Okay. Ma huwa al-hadith sharif? Hadith sharif क्या है? hadith sharif वो है जो कुछ के हुजूर अलैहि सलाम से रिवायत है, चाहे वो अल्फाज आपने कहे हों, या फिर कोई काम आपने किया हो, या फिर तकरीर उसको कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने, कोई मुसलमान सहाबी ने कुछ अमल किया तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनको रोका नहीं और ना मना किया, तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। और सिफतिन, या फिर कोई सिफत, हुजूर अलैहि सलाम कभी जो है बदमिजाज नहीं थे, किसी से नाराज़ नहीं होते थे, पेशानी पे आपके कभी बल नहीं आया, आप जो है खुंदा पेशानी से काम लेते थे, ये हुजूर अलैहि सलाम की सिफत है। अस्सिफतुल खल्क़ियतु अस्सिफतुल खुल्क़ियतु। सिफत 2 किस्म की है, एक खल्क़ी है, एक खुलुक़ी है। खल्क़ी सिफत बोले तो आपका चेहरा मुबारक, आपके दंदाने मुबारक, आपकी आँखें, आपके कान, आपके नाक, आपके लबो दंदा, आपके हाथ पैर, आपका जो वस्फ़ है वो जो है खल्क़ी सिफत कहलाता है। जबकि खुलुक़ी सिफत आपके अखलाक़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम आला अखलाक़ के दर्जे पर फाइज़ है। तो ये जो है हदीस शरीफ कहलाती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मन काना रुवातुल हदीथी? हु आर द नरेटर्स ऑफ प्रोफेटिक ट्रेडिशन? हु आर द नरेटर्स? अल मुहद्दिसूना। अल मुहद्दिसूना, the compilers of prophetic tradition are the narrators of prophetic tradition. Okay. Who are the compilers? Many compilers were there. Among them, 6 are very famous compilers of prophetic tradition.
among those six, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Tirmidhi, Imam Nasai, and Imam Abu Dawud. These six are the famous compilers of prophetic tradition. They achieved the position of leader in, they achieved the position of the chief in the custodians of prophetic traditions. Okay. मन काना रुवातुल हदीसी, हदीस शरीफ के रावी कौन है? तो हदीस शरीफ की रुवात जो है मुहद्दिसीन ने की है, ज्यों के तू अल्फाज हम तक पहुँचाए हैं, यूँ तो जो है करीब हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल के करीब 100 साल के बाद जो है हदीस शरीफ को जमा करना शुरू किया गया था, जमा करे, कलमबंद करे ताकि तलफ ना हो जाए। तो ये मुहद्दिसीन ने अपनी जानें लगाई, अपनी ज़िंदगियां लगाकर हम तक जो है ना ये हदीस शरीफ को पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, उनका एहसान आज तक भी उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और उनको ये सवाब जारिया पहुंचता रहेगा। अय्यु वहयिन खफियुन, which revelation is hidden? What is hidden revelation? Hidden revelation किसे कहते हैं? अय्यु वहयिन खफियुन, हिडन रेविलेशन किसे कहते हैं? हिडन रेविलेशन का मतलब ये है, व्हाट इज हिडन रेविलेशन? अल हदीस शरीफ हुआ वहयुन खफियुन। हदीस शरीफ इज हिडन रेविलेशन, prophetic tradition is hidden revelation. The revelation is of two types. One is al-wahyu al-jaliyu and the other is al-wahyu al-khafiyu. Al-wahyu al-jaliyu means the Holy Quran and al-wahyu al-khafiyu means the prophetic tradition. Okay. Ayyu wahyin jaliyun, what is apparent revelation? कौन सा वही जली किसे कहते हैं? तो वही जली जो है कुरान मजीद को कहते हैं। द ग्लोरियस कुरान इज द अपैरेंट रेविलेशन। अल कुरानुल मजीदु हुआ वहयुन जलीयुन। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मा इनकारुल हदीस शरीफी। मा इनकारुल हदीस शरीफी, व्हाट इज डिनाइंग द प्रोफेटिक ट्रेडिशन? ओके, हदीस मा इनकारुल हदीस शरीफी, हदीस शरीफ का इनकार क्या है? व्हाट इज डिनाइंग ऑफ प्रोफेटिक ट्रेडिशन? हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकार क्या है? तो इट इज द डिनाइंग ऑफ द होली कुरान। इनकारुल हदीस ही हुआ इनकारुल कुरान। हदीस का इनकार कुरान का इनकार है। डिनाइंग ऑफ प्रोफेटिक ट्रेडिशन इज denying the Holy Quran, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the glorious Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. The Prophet does not say anything from his own desire, but from the revelation revealed to him. And at another place it is mentioned, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever the Prophet gives you, take it, and whatever he forbids from you, whatever he forbids, abstain from it. These are the two verses denotes that the hadith is the next to the Quran only. What is the slight difference between the hadith and the Quran? The slight difference is the hadith cannot be recited in the prayer, whereas the Quran can be recited in the salah prayer. Man kana al-Imam al-Bukhari. Who was Imam Bukhari? So he was, al-Imam al-Bukhari was a muhaddis. Okay. Kana al-Imam al-Bukhari muhaddisun. Okay, muhaddisun. He was the custodian of prophetic traditions. Udhkur asma a'immatil hadith al-mashhurin. Mention the famous imams of prophetic traditions. Those are 16 number, as you know. In our last class and earlier class we come to know about these 6 names. Those are number 1 is Al-Imam Al-Bukhari. Okay. The second one is Al-Imam Al-Muslim.
Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam An-Nasai. These are the 6 famous imams of the prophetic tradition. उज़कुर अस्मा अइम्मतिल हदीथी अल मशहूरीन, मशहूर अइम्मा हदीस कौन है? तो मशहूर अइम्मा हदीस 6 हैं, वो है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई। ये 6 जो है मशहूर क्या है? मुहद्दिसीन हैं। ये लोगों ने जो है ना हदीस को एक जगह किया है। अय्यु शैइन यंबगी अन यकूना क़ब्लल कलाम, अय्यु शैइन यंबगी अन यकूना क़ब्लल कलाम, what is before speaking, what we need to do, what is necessary before speaking. Ayyu shayin yambaghi, what is necessary or what is essential, an yakuna qabla al-kalam, before speaking. So what is essential? As-salamu, greeting is essential before speaking. As-salamu qabla al-kalam, yambaghi an yakuna qabla al-kalam. कौन सी चीज़ ज़रूरी है बात करने से पहले? Which thing is essential before speaking? As-salamu, greeting, wishing is essential before speaking. As-salamu qabla al-kalam. It is a prophetic tradition. Min ayyi maidanin qataban nabi sallallahu alayhi wasallam fi hajjatil wada'i. In which ground the Prophet of Allah delivered his last sermon, Wada sermon, farewell sermon. So in the ground of Arafah, fi maidani Arafah khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, in the ground of Arafah, Prophet of Allah delivered his last sermon. Last question, question number 10. Halil hadithu sharifu tafsilun lil Quranil Kareem. Is prophetic tradition is a commentary of the glorious Quran? Yes, it is the commentary of the glorious Quran. Yes, it is the explanation of the glorious Quran. It is the detailed form of the glorious Quran. Hadith is the detailed form of the glorious Quran. In the prophetic tradition, it is mentioned in the Quran that iqamis salah, establish prayer. So how to establish prayer? It is not given in the Quran. It is not mentioned in the Quran. The Prophet of Allah has instructed his companions to offer prayer as you see offering me. Establish prayer as you see establishing the prayer, as you see me establishing the prayer. So the companions used to watch him, how he is praying, how he is, all the actions and acts they used to watch and they used to follow the same. In this way, the hadith is very important. In the Quran, it is mentioned that pay alms, pay zakah, wa'ita is zakah, pay zakah, give charity, give zakat. So how much we have to give, on what basis we have to give, it is not mentioned in the Quran. So the prophetic traditions explain about the zakah, that you have to give the 40th part of your wealth. Okay, 40वां हिस्सा देना है. That is 2.5% of the total wealth. We have to give in zakat for